How are you all? We will continue with explanation of chapter number 10, Respiration in Plants and Animals, session number 2. In last session, children, we have discussed about what is respiration, definition of respiration. Then we have discussed about types of respiration, in which we have learned about aerobic respiration and anaerobic respiration. In aerobic respiration, it is carried out in presence of oxygen. Anaerobic respiration is carried out in absence of oxygen. Again I repeat children, aerobic respiration is carried out in presence of oxygen and anaerobic respiration is carried out in absence of oxygen. So today we are going to learn about process of respiration, in which we are going to discuss about internal respiration and external respirations. Okay, so let's start with our chapter explanation children. External respiration. Now respiration is a process children, right? It requires some time, it requires some medium to carry out respiration. For example, oxygen. If oxygen is not present children, we cannot carry out respiration. But in absence of oxygen also, some living organisms are carrying out respiration. So the taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is called external respiration or breathing. External respiration क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर देते हैं, right? We exhale it out. It is called as external respiration or breathing. As soon as children we are born, we start breathing. The process starts till we are alive. जब तक हम जब born होते हैं और जब हमारी death होती है, तब तक breathing continue process हमारे body का होता है. So in that we inhale oxygen and we give out carbon dioxide. It takes place differently in different organisms. Some organisms use their lungs to breathe. अब सब organisms को lungs नहीं होते हैं, right? So जिसे lungs होते हैं, वो lungs के through respiration carry out करते हैं. Some use gills while others their skin. कुछ organisms gills use करते हैं जैसे कि fish, कुछ organisms skin use करते हैं जैसे कि snake है, earthworm है. They respire with the help of their skin, right? Next is internal respiration. Inside the cells, oxygen combines with glucose to produce energy. अब internal respiration में क्या होता है? Inside the cell, जो internal respiration है, वो cell के अंदर carry out होता है, right? Oxygen combines with glucose, यानी हम जो food खाते हैं, उसमें से glucose जब separate होता है, तो वो cells के अंदर जाता है, तो वो cells के अंदर oxygen और glucose combine करके energy produce करते हैं. And carbon dioxide and water are also produced in this. अब ये प्रोसेस में जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, तब केमिकल रिएक्शन होता है और उसके आउटपुट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें देते हैं आउटपुट में, आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन. इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज एक्सपेल्ड, यानी उसे बाहर फेंका जाता है बाय द बॉडी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं होता है. एज अ रिजल्ट, फ्रॉम वन साइड वी इनहेल एंड फ्रॉम द अदर साइड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. सम वाटर वेपर एंड हीट आर आल्सो गिवन आउट. जब हमें एनर्जी मिलती है, जब हम कुछ वर्क करते हैं, तब क्या होता है? हमारी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो तो कंटिन्यूस होती है, ब्रीदिंग भी हम कंटिन्यूस करते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलिंग. सो दैट टाइम चिल्ड्रन यू मस्ट हैव सीन दैट यू फील वेरी वार्म. जब आप कुछ काम कर रहे हो, तब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप रन कर रहे हो, तो क्या होता है? ब्रीदिंग प्रोसेस तो कंटिन्यू होता है, लेकिन आपकी बॉडी में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस
होती है. That is why children we feel very hot and we are having sweating on our body. So here water vapor is also given out in the form of sweating and heat energy is also given out. So let's check the chemical equation of this. Glucose plus oxygen gives out carbon dioxide, water and energy is released. Right children? That is why children whenever we are having any sports activity or we feel weak और हमें ग्लूकोज का पानी दिया जाता है तो हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस इज द रीजन दैट इफ वी इनटेक ग्लूकोज व्हेन वी फील वीक और इफ वी वांट टू डू सम heavy exercises or heavy sports, that time children if glucose water is given, oxygen is already continuously present in our body, we are inhaling it. So as a result children you will get instant energy for fulfilling the need of our body to get extra energy. I hope children you understood about external respiration and internal respiration. In next session children we are going to learn about different types or different parts of the body which are used by the organisms to carry out respiration. Right? So thank you and have a nice day children.